Hello everyone. Today we'll discuss something about overlapping of atomic orbitals resulting in the formation of covalent bonds. In the previous lectures we have discussed structure of molecules, shape of molecules, hybridization of molecules, how this hybridization takes place, how to find the hybridization of a central atom of a given molecule or an ion, and how to define the shape, structure and geometry of the molecules or the ions. Now in all this we say there is a formation of bond between the combining atoms. Now we haven't discussed how this bond formation takes place. We simply say atomic orbitals overlap to form chemical bonds, that is covalent bonds. Based on this we have discussed structure, shape, geometry, hybridization, bond angle, etc. etc. Now we'll discuss something about overlapping of atomic orbitals. What is the criteria for overlapping of atomic orbitals? What are the types of overlapping of atomic orbitals? How this results in the formation of chemical bonds? So coming to overlapping of orbitals. Now these overlapping of orbitals leads to the formation of a covalent bond. These covalently bonded molecules have different shape, different geometry, different types of angles between the combining atoms, and these shows different types of hybridization. Now these overlapping of orbitals these overlapping may be of different possibilities. First one, positive overlap. Then we can also have negative overlap. Then we can also have zero overlap. Now these overlapping of orbitals may be of positive overlap, may be of negative overlap, or may be of zero overlap. Now these positive, negative or zero overlap is basically based on the sign. Sign means the phase of the atomic orbitals which are going to be overlapped. So we say this is based on sign, that is phase of atomic orbitals. Now these phase sign, we may have a positive sign, we may have a negative sign. These positive or negative sign in the atomic orbital does not indicate the charge on the orbital. This simply indicates the phase of the orbital. Now in the previous chapters we have discussed these atomic orbitals behaves as if like a wave. Now this wave can have positive amplitude or this can have negative amplitude. This represents the signs which is also known as the phase. So this sign, this may be positive or this may be negative. This negative, positive simply represents the phase of the electron wave.
This may have a positive phase, this may have a negative phase. These positive and negative does not indicate the charge on the atomic orbital which is going to be overlapped. So based on the sign or the phase of atomic orbital, this may have a positive, this may have a negative, or this may have a 0. Now let's see positive overlap. Take this. We have a p orbital. This is a p orbital. Let's suppose this is a pz. This is negative. This is positive. So these negative, positive does not indicate the charge on this p orbital. This simply indicates the phase or the sign of this phase on this wave. Now this may overlap with s orbital. Suppose this is s orbital, this is positive. Now look at this, the positive phase of pz overlaps with positive phase of s. Same phase has to undergo overlap. So very important point regarding this overlapping of atomic orbital says, whenever atomic orbitals overlap to form bond, the overlapping atomic orbital should always be in the same phase. Positive has to overlap, and negative has to overlap. So we can have pz overlap with s orbital. So positive overlap with positive of s. This is ps overlap. Similarly, we can have ss overlap also. Suppose this is one s orbital. Suppose this is positive, then this overlaps with ss overlap. S orbital overlaps with s orbital, both are in positive phase, so this is positive overlap. Similarly, we can also have pp overlap. This is p. Suppose this is pz. This is positive, this is negative. Now these overlaps with another pz. This is pz, this is positive, this is negative. So pz may overlap with pz provided the phase should be same. We can also have this, look at this. If suppose this is pz, then we can have this as px. Let's suppose this is positive, this is negative. Now take another px. This is another px. So these positive overlaps, negative overlaps. So these types of overlapping with the same phase is what we call as positive overlap. Now coming to negative overlap, in these type of overlap, that is out of phase overlap. Suppose take this case, we have a pz. ये मान लो कि आपके पास pz है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. अनदर pz आप दे दीजिए. This is negative, this is positive. ये भी pz है. लेकिन if you look at this very carefully, this is positive phase, this is negative phase, so there is no possibility of overlap. यहाँ पे overlap नहीं हुआ. These type of overlaps को हम लोग क्या कहेंगे? Negative overlap. आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं. Suppose मान लो ये px है, positive, negative. Take another px. मान लो ये भी px है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है.
तो दिस इज आउट ऑफ फेस ओवरलैप। इस तरह का ओवरलैप को हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव ओवरलैप। नेगेटिव ओवरलैप से बोन कभी नहीं बनेगा। बोन तभी बनेगा जब आपके पास पॉजिटिव ओवरलैप होगा। सो व्हेनेवर वी टॉक ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, the type of overlapping that is taking place is positive overlap, means same phase atomic orbitals will undergo overlapping, resulting in the formation of chemical bond. So we say this is positive same phase overlap, negative out of phase overlap. Now coming to this zero overlap, this is also out of phase overlap. आउट ऑफ फेस ओवरलैप्स, बट इसमें क्या होता है? सम पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे, सम नेगेटिव ओवरलैप करेंगे, तो रिजल्टिंग क्या होगा? जीरो ओवरलैप। सो टेक दिस केस, सपोज मान लो ये आपके पास px है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। नाउ सपोज दिस इज टू बी ओवरलैप विद s ऑर्बिटल, तो ये मान लो s के साथ ओवरलैप किया, दिस इज s। तो नाउ लुक एट दिस, ये आपके पास s ऑर्बिटल है, ये आपके पास px है, px पॉजिटिव नेगेटिव, ये s ऑर्बिटल मान लो ये आपके पास सपोज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो ओवरलैप कर दिया, और ये आपके पास इधर भी, तो इस तरह के ओवरलैप को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो ओवरलैप, और जिसमें ओवरलैप ही नहीं होगा। तो दिस इज द ओवरलैप कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सो फॉर दिस आपको जो दिमाग में रखना है, क्या चीज दिमाग में रखेंगे? फेज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको आपको ओवरलैप करना है। तो यहाँ पे फेज का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ऑर्बिटल्स में चार्जेस है, ऑर्बिटल्स में चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्बिटल्स में हम लोग साइन दे देते हैं ताकि ये पता चले कि ये एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है या एम्पलीट्यूड नेगेटिव है। तो सेम फेज ओवरलैप करेंगे, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जिससे इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे। अब जहां पे इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर एक डिस्ट्रक्टिव है, दैट मींस आउट ऑफ फेज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में देयर इज सम फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, जिसके वजह से एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो जब ये डिस्ट्रक्शन हुआ तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो जहां पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ओवरलैप्स का एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग कंसेप्ट। नाउ दिस ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, जिससे बॉन्ड बनाना है, और ये टू टाइप्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये रहा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इससे हम लोग दो टाइप्स मिलेंगे। फर्स्ट वन इज सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड। मतलब कहने का मतलब है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप किया, ओवरलैप करने के बाद दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड बनेंगे। तो एक का हम लोग नाम रखते हैं सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड इसका है पाई बॉन्ड, इसका नाम है सिग्मा। तो हम लोग पहले चलते हैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड हाउ दिस बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो सिग्मा बॉन्ड,
सिग्मा बॉन्ड्स तब बनेगा जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड ऑन कॉलिजन एंड टू एंड, हेड टू हेड along this internuclear axis, जिसमें आपके पास मॉलिक्यूल है, सपोज एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो अगर दोनों ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ओरिएंट है और दोनों हेड हेड कोलाइड करेंगे या एंड टू एंड कोलाइड करते हैं, these types of overlappings is known as sigma bond formation. तो सपोज मान लो, look at this, इस तरह से ये this is one atomic orbital, this is another atomic orbital. Let's consider this is the internuclear axis. तो ये head on collision हुआ. This is what we call as end to end overlap or head to head collision or simply head on collision. These types of overlapping is known as sigma bond. Formed by head on collision, that is head to head collision or end to end collision along internuclear axis. Definition is clear. एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, किस डायरेक्शन में ओवरलैप करेंगे, along this internuclear axis, और किस तरह से ओवरलैप करेंगे, डायरेक्ट हेड ऑन कॉलिजन, एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे. These types of overlap is what we call as sigma bond. Now look at this sigma bond. चलते हैं सिग्मा बॉन्ड देखते हैं. चलिए, सपोज एस एस ऑर्बिटल चलते हैं, एस ऑर्बिटल. सपोज लुक एट दिस, ये एक एस ऑर्बिटल है, दिस इज एस ऑर्बिटल, and this is another s orbital. ये another s orbital. जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, दिस ये ओवरलैप किए along this internuclear axis, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो ये है एस एस ओवरलैप, एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे. सिमिलरली वी कैन हैव लुक एट दिस, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ओवरलैप. नॉर्मली पी जेड, कोई भी अगर मान ले एस कैन ओवरलैप इन पी एक्स पी वाई पी जेड, बट कन्वेंशनली पी जेड को हम लोग मॉलिक्यूलर एक्सिस मान के चलते हैं. तो दिस सपोज ये एस पी जेड है, तो ये आपके पास एस ऑर्बिटल है और ये ओवरलैप करेंगे पी के साथ ओवरलैप. तो मान लेता हूं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एंड दिस इज पॉजिटिव. अब ये दोनों ओवरलैप करेंगे. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे ओवरलैप कर गया, एंड दिस इज अलोंग दिस इंटरन्यूक्लियर. तो ये डायरेक्ट हेड कोलाइड किए, दैट इज हेड ऑन कॉलिजन. सिमिलरली वी कैन टेक दिस
अब चलिए पी जेड कोलाइड करेंगे तो मान के चलिए ये एक पी जेड है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। नाउ ये ओवरलैप करेंगे अनदर पी जेड ऑर्बिटल के साथ। तो वी हैव two pz orbitals which are going to collide end to end। अब ये कोलाइड किए चले, तो ये देखिए दिस इज pz नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप किया या पॉजिटिव पॉजिटिव भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे लुक एट दिस, इन ऑल दिस हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हेड ऑन कॉलिजन, डायरेक्ट एंड टू एंड हेड टू हेड कोलाइड करके बना दीज टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन विच the atomic orbitals collide कर रहे हैं head on collision, head to head, end to end direct collision है, जिसको नाम दिया हमने सिग्मा बॉन्ड। ना अब चलते हैं पाई बॉन्ड। अगर ये डायरेक्ट हेड ऑन कॉलिजन पॉसिबल है तो देयर इज अनदर पॉसिबिलिटीज कि डायरेक्ट हेड ऑन कॉलिजन ना करें, अब ये क्या करें, लेटरल ओवरलैपिंग करें और साइडवेज ओवरलैपिंग करें। तो दोज टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग which is always perpendicular to the internuclear axis। अगर ये internuclear axis है, ये बन गया internuclear axis, and if you look at this, ये internuclear axis है, तो एक ऑर्बिटल यहाँ पर है, सेकेंड ऑर्बिटल यहाँ पर है, ठीक है। तो these two orbitals may also underlap, तो ये कैसे कर रहे हैं, sideways overlap। So these types of overlap between these two orbitals, which is not direct head-on collision, but this is lateral overlap or sideways overlap। तो these types of overlap को हम लोग नाम दिया है कौन सा, पाई बॉन्ड। तो these pi bonds are formed by, definition लिखिए, formed by sideways or lateral overlap of atomic orbitals। तो यहाँ पे हेड ऑन कॉलिजन था, दिस इज साइडवेज और लेटरल ओवरलैप, बट ये साइडवेज लेटरल ओवरलैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। These are perpendicular to internuclear axis। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि P have three orbitals। Look at this, this is three of x, y, z। तो x, y, z, out of this z is considered to be along this intermolecular axis। If this pz is forming head-on collision resulting in the formation of sigma bond, then these two orbitals x and y, this is perpendicular to this internuclear axis, so this may undergo of sideways overlap, this may also undergo sideways overlap। तो conventionally pz is molecular axis, then x and y may undergo pi bond। So look at this example, px and px overlap। So look at this, we have this is px, this is negative, this is positive। Now these overlaps with another px orbital
this is px. Now pz forms sigma bond head-on collision. Then these px being perpendicular to pz, there is no possibility of end-to-end overlap. So the only possibility is that is sideways overlap. So these results in the formation of pi bond. So this is sideways or lateral overlap. So this is negative, negative, positive, positive. So this is perpendicular axis, but this is perpendicular perpendicular axis. So this is what you call as pi, lateral or sideways overlap. Similarly, we can also have py. So look at this. If this is x, then x and y is again perpendicular to each other. So we can say this is, suppose this is py, this is positive, this is negative, then another py, positive, negative. So these two overlaps. Negative, negative, positive, positive. So these overlap को हम लोग कहते हैं pi bonds. So simply saying, sigma bond is formed by head-on collision along the internuclear axis, whereas pi bond is formed by lateral or sideways overlapping of two parallel orbitals, which is always perpendicular to the internuclear axis. So if you look at this pi bond and sigma bond, this is of positive type. Same phase atomic orbitals overlap to give you pi bond formation or sigma bond formation. So we have this sigma bond and pi bond. So I hope the definition point of view of this sigma bond and pi bond is clear. How this bond formation is takes place and different types of head-on collision or lateral overlap collision ये आपके सामने मैंने रख दिया. Okay. Now once we know the definition of sigma bond and the pi bond, let's differentiate between these two. दोनों के बीच में पहले differentiate करते हैं. Then हम लोग counting of pi bonds और sigma bonds फिर या formation हम लोग फिर चलते हैं. तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये ना, सिग्मा बॉन्ड बाय हेड ऑन कॉलिजन, पाई बॉन्ड बाय लेटरल ओवरलैप कॉलिजन. सेकंड, नाउ हेड ऑन कॉलिजन undergoes maximum overlap compared to that of pi bond. तो overlapping is maximum. Overlapping is less. तो इतना पता चल गया. अब देखिए ओवरलैप करने के बाद बॉन्ड बना, तो जितना ओवरलैप करेंगे उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा. अगर ओवरलैपिंग टेंडेंसी कम है तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो भी कम होगा. तो कहने का मतलब ये, सिंस sigma bond is formed by head-on collision in which overlapping is maximum between the orbitals. So if overlapping is maximum है तो bond strength will be more. That means sigma bond is always stronger than the pi bond. Bond is stronger. तो यहाँ पे क्या होगा, bond is weaker. So sigma bond is always stronger than pi bond. The reason being, sigma bond head-on collision है, overlapping is more है, इसलिए bond strong है. Pi bond overlapping is less, so bond is weaker. Now look at this, ये head-on collision है.
अब ये हेड ऑन कॉलिजन है, तो कोलाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज अलोंग दिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। तो इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दैट इज सिमेट्रिकल अराउंड दिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। इन केस ऑफ पाई बॉन्ड, अब चलिए ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, this is internuclear axis and these two orbitals which is parallel to each other or perpendicular to the internuclear axis ये overlap किए। तो अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज नॉट सिमेट्रिकल अराउंड दिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कुछ ओवरलैप ऊपर करेंगे कुछ ओवरलैप नीचे करेंगे। तो wherever we have this pi bond इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है that is not symmetrical along this internuclear axis, that is unsymmetrical. Whereas for this sigma bond electron density is along this internuclear axis and this is always symmetrical distribution of electron density. चलिए electron distribution is symmetrical along internuclear axis. That is, in case of pi bond, electron distribution is unsymmetrical along this internuclear axis and is above and below the internuclear axis। तो internuclear axis के ऊपर और नीचे होगा। Now coming to this next, अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है that is undergoing head on collision है। तो once head on collision हुआ, now without breaking this bond we can undergo infinite numbers of rotation. That means whenever we talk of sigma bond there is always possibility of free rotation. Without breaking bond we can undergo rotation by EMF. So sigma bond free rotation is possible। तो रोटेट करने में बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। Now let's talk of pi bond। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दिस इज अंडरगोइंग लेटरल ओवरलैप। ये रहा, ये प्लस है माइनस है, दोनों ओवरलैप किया। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ विल देयर बी पॉसिबिलिटी ओवरलैप? ये दोनों ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव इधर है, अब ये परपेंडिकुलर है। अब कंडीशन ये चाहिए कि भाई ये दोनों क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। अब दिस कम्स आउट टू बी परपेंडिकुलर। So that means whenever we talk of pi bond, the free rotation is not possible or rotation is restricted. Rotation is restricted. So sigma bond free rotation possible without breaking bond. In case of pi bond free rotation is not possible, rotation is restricted। अगर आपको रोटेट करना है तो there is no possibility of pi bond को ब्रेक करके रोटेट करना पड़ेगा। तो pi bond rotation around this bond is not possible or rotation is restricted। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नाउ बोन बनाने के बाद मॉलिक्यूल एज्यूम सम स्ट्रक्चर शेप ज्योमेट्री। तो बोन का डायरेक्शन होगा ऑब्वियसली, जब बोन स्पेस में डायरेक्ट करेंगे ओनली देन मॉलिक्यूल विल एज्यूम सम शेप ज्योमेट्री। तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल नेचर ऑफ द बॉन्ड। दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री, ये कौन डिसाइड करेंगे? सिग्मा बॉन्ड। Whereas this pi bond does not have any contribution to the directional property,
मीन्स पाई बॉन्ड का डायरेक्शन नहीं होगा लेकिन सिग्मा बॉन्ड का डायरेक्शन होगा। तो सिग्मा बॉन्ड का डायरेक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा बॉन्ड इज यूज्ड फॉर डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, व्हेयरएज पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर और शेप को डिटरमाइन नहीं करने में हेल्प नहीं करेंगे। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से बॉन्ड छोटा हो जाएगा। अगर बॉन्ड छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। दैट इज द ओनली थिंग। सो कमिंग टू दैट पॉइंट, तो सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। अब ये दिस गिव्स यू ज्योमेट्री, शेप को डिफाइन करने में सिग्मा बॉन्ड काम आएंगे। नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, दैट मीन्स पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल का शेप, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री डिसाइड करने में हेल्प नहीं करेंगे। ओनली थिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बट length of bond decreases due to pi bond formation। तो अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुआ मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। तो ये है आपके पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का डिफरेंस और वो कैसे प्रॉपर्टी। तो मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, head on collision, sideways collision, yes, sideways overlap. Head on collision, overlapping is maximum, overlapping is less. If the overlapping is maximum, bond becomes stronger. If overlapping is less, bond becomes weaker. Electron distribution or electron density is symmetrical along the internuclear axis, is unsymmetrical along the axis, but above and below the axis. Because of this head-on collision, the free rotation of sigma bond is possible without breaking any bond. Pi bond rotation is restricted because अगर rotate करना है तो we have to break the pi. These sigma bond shows directional property, and this directional property helps in defining the shape, geometry, or structure of the molecule. Pi bond is non-directional, so this does not have anything to do with the shape, structure, or geometry of the molecule. The only thing the pi bond helps is it decreases the bond length. If the bond length is decreased, bond strength becomes increases. So this is the comparative study between sigma bond and pi bond. So now let's talk of sigma bond formation and pi bond formation. Example के साथ मैं आपको शो करता हूँ। तो फोर्थ सम लोग चलते हैं, formation of hydrogen molecule. So we have two hydrogen. If you look at this, hydrogen is having one electron, so we have one s. Hydrogen electronic configuration 1s1. So look at this. This is s orbital. This is another s orbital. So this is s overlap, ये overlap किया, and we say this is hydrogen sigma bond because this is head on collision. So we say this is sigma bond. Take this X2, this may be Cl2, this may be Br2, this may be I2, this may be F2, halogens. So let's take the case of F, atomic number 9, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p5. So if you look at this 2p5, so we have one
unpaired electron. Let's suppose this is px, this is py, and this is pz. So we have two fluorine. Suppose this is pz, this is negative, this is positive. These combines with another pz. Suppose this is positive, this is negative, and these combines to give you so look at this. This is F, this is F, this is F2, means we have F. Look at this. We have two electrons. This is placed here. This is positive, positive, negative, negative. So this is, again look at this, hadron collision. So we say this is sigma bond. So this is how we get head-on collision to give you sigma bond. Now coming to, let's take some examples involving sigma bond as well as pi bond. Take this case. So let me give some more examples also. Take this HF or HCl, HBr or HI. Let's take this HF. So hydrogen, we have s orbital. Fluorine, we have pz orbital. So hydrogen has got one electron, fluorine has got one electron. This is pz, this is positive, negative, this is positive. Now these overlaps to give you hydrogen, fluorine. So we have two electrons. This is placed here. So again look at this head-on collision. So this is again sigma bond. So this is how we can describe, explain head-on collision or sigma bond formation. Now let's take up some other examples in which pi bond formation also takes place. So let's take this example, formation of O2, oxygen. Oxygen, atomic number 8, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4. So if you look at this 2p4, we have 3p orbital. So there are two unpaired electrons. Let's suppose this is px, so we have this is py, this is pz. So we have two oxygen. Suppose look at this, we take this py and pz. This is oxygen. For this oxygen we have this is pz. Let's take the other one, that is py. So let's take this is py, this is pz. This is having one electron, this is also having one electron. Another oxygen, this is second oxygen. So this is py, this is pz. This pz is having one electron, this is having one electron. Now these overlap, दोनों overlap करेंगे.
So we have this oxygen, oxygen. Now look at this. This is oxygen. Second oxygen. So this is PZ. So we have 2 electrons here. Now, since this is PZ, that is head-on collision, so this becomes sigma bond. Now another p orbital left, that is Y. This is, now look at this p is having 1 electron, this is having 1 electron, both under the opposite spin. Now these two orbitals are parallel to each other and this is perpendicular to internuclear axis. So we say if these orbitals undergoes sideways overlap, resulting in, so this is, so look at this, there is some overlap above this internuclear axis and this is second overlap below the plane of internuclear axis. So this gives rise to pi bond. So simply we say oxygen, oxygen, so there is double bond. So look at this, one sigma bond and one pi bond. So out of this, one is sigma bond, the other one is pi bond. That means, look at this very point carefully, listen to this point carefully. Whenever there is a multiple bond between any two combining atom, out of this, one has to be compulsory sigma bond and the rest is your pi bond. So look at this, oxygen, oxygen forms a multiple bond. The bond between oxygen, oxygen is double bond. Two bonds, we said this is double bond. So in this double bond, one bond has to be sigma bond and the second one has to be double bond. How is it clear? Good. Now let's take some more example. Of this double bond formation. Let's take this C2H4, in which there is a double bond between carbon and carbon. So in this, carbon is undergoing sp2, both the carbon is undergoing sp2. So look at this, we have a carbon, this carbon is having sp2, so number of hybrid orbital is 3, so there are 3 sp2 hybrid orbitals. So we have this carbon, so let this be the 3 hybrid orbitals. So these are 3 sp2. If you join this gives you triangular planar having bond angle 1, 2, 0. So this is, all these are sp2, this is sp2, this is sp2. Now when we have these two p orbital used, one of the p orbital is left unused and this p orbital is perpendicular to the plane of molecule. That is pure p orbital. Now similarly, second carbon also has 3 sp2 hybrid orbitals. So let this be 1 sp2, second sp2, this is third sp2. Now since 2 p orbitals are used in hybridization, so 1 p orbital is left unused and which is perpendicular to the plane of molecule. So let this be the p orbital pure. Pure p orbitals, and these are again sp2, this is sp2, this is also sp2.
So now look at this. These carbon and carbon, these two sp3 orbitals are along this internuclear axis, so there is a possibility of head-on collision. So we have these carbon and these carbon. So sp2 head-on collision. So because of this head-on collision, there is a formation of sigma bond. So I say this sigma bond is formed by sp2 sp2. So this is sigma bond. Now look at this. So these sp2 and these sp2 undergoes head-on collision, resulting in the formation of sigma bond. Now look at this. We have sp2. So this is left with one sp2, second sp2. Similarly, this carbon is left with sp2. Now look at this. We have hydrogen. Hydrogen has got only s orbital. So this sp2 overlaps with s orbital of hydrogen. So this is hydrogen. So this bond is formed by sp2 of carbon and s orbital of hydrogen. Similarly here, this is formed by sp2 of carbon with s orbital of hydrogen. Again look at this. These sp2s overlap. This is again head-on collision. So we say this is again sigma bond. This is again sigma bond. Now after this, each carbon is left with one pure p orbital. So just to differentiate, let me give you some another color here. Now we are left with pure p orbital. So these two pure p orbitals are parallel to the internuclear axis, and these undergoes sideways overlap, resulting in pi bond formation. So this is pi bond. So this is how pi bond formation takes place in C2H4. So simply we can write out, look at this. This is carbon. This is carbon. So carbon is having double bond, one bond, two bond. Then we have carbon hydrogen. So these double bond, all of these, one has to be sigma bond, the other one has to be pi bond. So let's count the number of sigma bonds and pi bonds. Number of sigma bond: 1, 2, 3, 4, 5. The total number of sigma bond is 5. Total number of pi bond is 1. So there is only one pi. This is so how we account for formation of double bond, means pi bond and sigma bond. Now this is double bond. Now let's take the case of triple bond also, in which 3 bond is formed between the combining atoms. So for this, we'll take the help of this molecule, N2 molecule, nitrogen. So we have nitrogen, atomic number 7, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p3. So 2p3, okay, this p orbital is half filled. So we have px, py and pz. So all these orbitals are singly occupied. So now look at this, we have this nitrogen, and this nitrogen has got 3 p orbitals
and these p orbitals are perpendicular to each other. So we have px, py and pz. Suppose look at this is look at this. We have this nitrogen, and this nitrogen has got 3 p orbitals, one along z axis, one along x axis, one along y axis. Let's suppose this is pz, this is py, and the third one is pz. This is pz. All these orbitals are perpendicular to each other. Similarly, take this second nitrogen. So we have pz, py, and px. This is x, this is py, and this is pz. Now look at this. Each p orbital has got one electron. Now look at this. pz and pz. There is a possibility of head-on collision. So this results in the formation of nitrogen. So look at this. We have a head-on collision here. So this is pz. So we have this sigma bond. Now after this head-on collision, we are left with py and py. So look at this. We have py, we have py. So there is no possibility of head-on collision. So these py overlaps to give you pi bond. So we have a pi bond, and this is between py and py. That is py. After this, we are also left with px and px. So we have this px. So these px, again px being parallel to each other, there is again possibility of sideways. So these also gives you sideways overlap, that is px and px. So nitrogen and nitrogen forms a triple bond. So we say this is nitrogen, there is a 3 bond form, that is triple bond. So as I told you earlier, whenever there is a multiple bond between any two combining atom, उनमें से एक क्या होगा सिग्मा बॉन्ड, बाकी रिमेनिंग क्या होगा पाई बॉन्ड. So out of these 3 bond, one is sigma and the other 2 is pi bond. तो यहाँ पे कितना pi bond हुआ? 2 pi bond and 1 sigma bond. So this is how N2 formation takes place. फिर हम लोग एक और एग्जांपल चलते हैं. Let's take the help of this C2H2 ethyne or acetylene. Ethyne or acetylene. यहाँ पे कार्बन sp hybridization of central carbon is sp. तो how many sps बनेगा? 2 sp बनेगा, 1 plus 1. Starting with this carbon is carbon, 2 sp है, तो एक sp इधर हुआ, सेकेंड sp इधर हुआ, so sp 2. So this is sp, this is also sp 2.
तीन p ऑर्बिटल था, t में से एक हाइब्रिडाइजेशन यूज किया तो बाकी दो क्या हुआ, अनयूज बचा हुआ है। अब ये दोनों अनयूज है, ये इन दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो सपोज दैट इज पी वाई है, then the other one will be px. Now these combines with second carbon, तो एक ये sp हुआ, सेकेंड ये भी sp है, ये भी sp है। फिर उसके बाद दो अनयूज p ऑर्बिटल है। लेट्स सपोज ये आपके पास क्या हुआ, py, then the third p orbital is px। तो ये आपके पास मिलके बॉन्ड बना, तो कार्बन एंड कार्बन, तो sp और sp हेड ऑन कॉलिजन, डायरेक्ट एंड टू एंड ओवरलैप, तो इससे क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। सो दिस इज sp जिससे सिग्मा बॉन्ड बना। अब उसके बाद चलिए एक और sp बना हुआ है, दिस sp जो यहां पर है, अब ये किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप किया, ये यहां पे हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो बॉन्ड है दैट इज S ऑफ हाइड्रोजन एंड sp ऑफ कार्बन, ये हाइड्रोजन। तो ये फिर से बना sp ऑफ कार्बन एंड s ऑफ हाइड्रोजन, तो ये अगेन हेड ऑन कॉलिजन है, तो क्या हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड, तो ये हुआ सिग्मा बॉन्ड बना। अब ईच कार्बन के बाद दो अनयूज हाइब्रिड p ऑर्बिटल्स है। सपोज दिस इज py, इसके पास भी एक py है, तो दीज टू py साइडवेज ओवरलैप किया, तो इससे बना पाई बॉन्ड, और ये कहां से, py और py ओवरलैप किया। उसके बाद अब बचा px एंड px, तो ये रहा px 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 और ये p, अब ये क्या हुआ, साइडवेज ओवरलैप किया। अब फिर इससे क्या बना, पाई बॉन्ड, तो दैट इज px px। तो सिंपली इसको हम लोग क्या लिखते हैं इस तरह से, कार्बन कार्बन 1 2 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना इस तरह से, और अभी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो अब हम लोग चलते इसमें पाई बॉन्ड्स, तो ये अगर सिग्मा बॉन्ड है तो ये दोनों क्या हुआ, पाई बॉन्ड। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना हुआ, 1 2 3, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 2 2 पाई बॉन्ड्स। सो दिस इज हाउ वी काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड। तो एक बार मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूं, व्हेनेवर कंबाइनिंग एटम्स के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड बना तो उनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी आपके पास क्या होगा, पाई बॉन्ड्स होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करते हैं। तो ये है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन और सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से रिलेटेड है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स काउंट करना है। तो टेक दिस C6H6 बेंजीन, स्ट्रक्चर ये।
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 to 12 sigma bond pi bonds 1 2 3 pi bonds. Okay. Take this example. कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए, ये स्ट्रक्चर, तो ये डबल बॉन्ड है, इनमें से एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, सो नंबर ऑफ सिग्मा 2, नंबर ऑफ पाई 2. टेक दिस CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड CH2. अब हाइड्रोजन कभी पाई बॉन्ड तो नहीं बना सकते बिकॉज हाइड्रोजन के पास ओनली वन ऑर्बिटल है, दैट इज एस ऑर्बिटल है. तो इसको अब इस तरह से लिख सकते हैं. तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड 1 2. इस तरह से हम लोग किसी भी अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर गिवन है तो वो स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट कर सकते हैं. सो दिस इज द some summary or some brief idea about overlapping of atomic orbitals. How many types of overlapping, what is the difference between the two, or what is the comparison between the two, कैसे overlap किया, how to find the number of sigma bonds, how to find the number of pi bonds. So with this we will conclude here. I hope you got this point.